Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Something Hot and we're here at the press conference for Baarwan Khiladi. Baarwan Khiladi is an upcoming web series that will be airing and streaming on TapMad. आप लोगों ने ट्रेलर्स देख लिए होंगे, OST भी सुन लिया होगा, ये भी मालूम है कि मायरा खान and नीना काशिफ are the co-producers. ये Soul Fry Films की पहली production है for web, and we've got a line of very interesting cast which is primarily young new talent. हम देख रहे हैं दानियाल ज़फ़र को, हम देख रहे हैं शाहवीर जाफरी को, हम देख रहे हैं किंजा हाशमी को. इनको हम देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते हैं और हम इनको टेलीविजन पे भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं. सो इट्स इंटरेस्टिंग. क्रिकेट थीम है, लॉट्स टू टॉक अबाउट. ऑफ कोर्स मेरे ख्याल है पाकिस्तान तो थ्राइव्स ऑन क्रिकेट एंड स्टार्स एंड एंटरटेनमेंट, सो व्हाट कैन गो रॉन्ग. अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें कुछ सवालों के जवाब माहिरा ने दिए, कुछ नीना ने दिए. अदनान सरवर इज़ द डायरेक्टर. ऑफ कोर्स हमने उनकी शाह भी देखी थी, मोटरसाइकिल गर्ल भी, खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं, तो इससे बेहतर डायरेक्शन कौन कर सकता था. Lots to talk about. We'll be meeting the cast and the crew, the headliners in the boardroom very shortly. और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं about the series and about their careers और ये career यहाँ से कहाँ जाएगा. आइए उनसे बात करते हैं. Okay, so I have with me the co-producer of Baarwan Khiladi, Maira Khan, and Nina is somewhere around, and I have the director flitting around, and director of Baarwan Khiladi, Adnan Sarwar. दोनों के काम से हम बहुत वाकिफ हैं. Of course, we've seen them both on the big screen. We've seen them on television, as in their work on television, and now on digital. सवाल मेरा आप दोनों के लिए ये है कि we're delighted that these avenues are opening up. Yeah. You know, we had cinema, then we have television, we have OTT now, digital platform. People are getting opportunity. There's more content is being driven out. There's no censorship, and you know, the world is kind of opened up. But my question to you is: does digital have a time? Does it have a lifeline? Is there a legacy that you would leave behind? Is it going to create stars that you would remember 30 years down the road? Is it? I mean, you are larger than life. You've been on the big screen, and like, wow. Do you think there can be can a Maira Khan be created on a digital platform? I gave you the when we were over there, you asked the same question, and I gave you the example of somebody like Anna Taylor-Joy, yeah, who did a couple of features which were low budget. She did The Witch with Robert Eggers, I think, and she did a couple of other features, and she was not the A-lister that she is now. And then she did something called The Queen's Gambit. And that was the thing that projected her to like global superstardom. Right. Fine, right now we don't have the kind of reach that someone like Netflix has, or someone like Prime does. But yeah, I mean, good content, if it's strong enough, and if you're the person who's carrying the or shouldering the content, then yeah, there's always. Yeah. I also think that it's a different kind of superstar, you know? I feel that there are so many actors who do not get their due in film. Absolutely. Right? Yeah. And that's something where, I mean, think about it. I mean, look at Sacred Games, look at Queen's Gambit. There are so many shows that make you think that, wait, but this actor was in that film. Why didn't I look at him then? Or why didn't I feel... Because they did not get that opportunity in film. Yeah. Right? So, yeah, maybe they won't be film stars, but they will be stars. They'll be stars. What is a star? What is a star, you tell me? For me, it's somebody who you aspire to be, somebody you want to hold on to but can't be approached. But don't you think the it's old school. So that's our idea, right? So yeah, but isn't that now like it's... I think what's happening here also, I asked myself the same question because I'm also, I gravitate towards cinema. Yeah. But the thing is, maybe it's because we belong to the previous wave of content creators, and I don't like the word content per se, for especially movies and cinemas and so, but we belong to the previous wave of, look at somebody once again like Maira was saying, look at somebody like Pankaj Tripathi. Yeah.
that you're used to Really? seeing as a small supporting actor in big movies. Right. Playing a dad, playing a cha-cha, Yes, playing yes. somebody who's going to rough up he's playing a loan shark. Yeah. And now somebody comes along and makes this entire series around him, and Yeah. we're able to see this actor in a way, because 90 minutes or 120 minutes, Yeah. and the financial constraints that go with recovering 100 crore at the box office, Yeah. maybe you need that big name. So avenues are opening up, and maybe we're just not at this stage used to making that transit. We're not ready to Right. a slot. We are, right. So coming to Baarwan Khiladi, you've introduced a lot of new talent. And, of course, Daniyal has done one, like, एक रमजान सीरियल उन्होंने किया था उसके अलावा new talent, new boys, we haven't seen them. Do you see the potential for them to like become those like what is the potential do you see? So I feel, and we were talking about this right now, even so with Sadik I was talking about this, that I mean, my idea of being a star is longevity, is what they all laugh at me for saying this, but Sarmad always told me, लंबी रेस का घोड़ा गंगू, लंबी रेस का घोड़ा. हमारा लंबी रेस भी अब छोटी हो गई है. So, what do you do now? That's up to them. That's up to them. They will be given platforms. They will be given opportunities. What will you do with that? That's their thing. Can there be people who will come out who will go places? Yes, I believe so. Right. I believe so. I in fact think that there will come a time where people will be picked from digital and put in big films, and then they will become these, film stars. But I do feel that that's what they do with it. I don't know if we can create. We were. I'm sorry about cutting you off. We were, because in the last 1 year, I think I've learned more about this line of work than I have in the last 10 years. Because working with people who've got experience and I work in a bit of a vacuum. Yeah. When we were on set for Nikar, somebody, I'm not going to name who, showed up on set who's very recently became a viral sensation in the social media stuff. Okay, now let's think. And I'm also thinking. There's really too many people, and I'm also thinking. I'm thinking too. Irrelevant. Okay, And chalo. I asked Myra, I'm like, where do you see somebody like him or her? I'm not even going to be. I was like, where do you see their career going in 10 years? Because right now they're everywhere. Right now, I know what you're talking about. Myra said something which has stuck with me. She's like, it's about continuous hard work over a long period of time. Yes. It's not about that one video or that one thing. It's about you have to put in, or so I've learned, a lot of work, a lot of effort to have that kind of career that you're talking about. Yeah. And just consistent. Just consistency. You'll fall. Yeah. You'll have a flop. Yeah. Because your job is to constantly make that film, that TV serial, whatever, and keep on going and going and going and going, because that is actually the job. Yeah. So I think this was our work ethic, that you have to just keep on going. So yeah, like you said, I know you're talking about that. If you consistently, working hard. We talk about censorship on the big screen and on television, and then there's none right now on digital. Thank God. So far. Yeah. थोड़ा बहुत कोशिश करते रहते हैं. Did you ever feel as a producer and as a director that let's not go there, because हमारी जो देखने वाली आवाम है वो इतनी tolerant तो नहीं है जितनी बाहर है. I mean, there's a lot more room to play when you're doing an international project. जुबान की भी आपको थोड़ी सी flexibility मिल जाती है, गाली गलोच भी चल जाती है. Netflix पे तो सब कुछ ही चल जाता है. So we saw Sarmad's little teaser. I'll be very honest, I was very squeamish because I've only ever done cinema. Yeah. Right, so but मगर अदनान सिनेमा में सब कुछ चलता है लेकिन आप कुछ चीजें बोल नहीं सकते ना. Exactly. कुछ words नहीं बोल सिनेमा तो चलता है भाई, because you guys you're on television as well, you're on film as well. So do you feel that if you cross that barrier on digital, लोग कहेंगे oh God ये क्या हो गया? मैं एक चीज बताऊं आमना, I really 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 believe this. जब आप कोई चीज डालते हैं, चाहे वो फिल्म हो, टीवी में हो या सीरीज में भी हो, जहाँ भी, जब आप कोई चीज डालते हैं ना for the heck of it, for the sake of it, वो it sticks out like a sore thumb. Right. It doesn't go down well. But if there is something put in because it is absolutely required and necessary. Can you imagine Sarmad? Can you imagine the coach not talking like this? I mean, the fun of it was कि वो कहता है मैं बल्ला
ये record हो रहा है. हम चाहते हैं मायरा खान दिखें. But it's true. I mean, मैं कुछ कह नहीं That's रही how मैं they कह. talk, yeah. But that's how they talk. Trying to seek controversy. Yeah. By saying these things, I don't think that's going to work. Yeah. But like she said, a coach is going to speak like that Right. to his players. Players are going to talk like that. So I mean, if it's honest and it's in context, and thankfully right now we can get away with it. Right. And also we didn't do it just for the sake of doing it. You know कि just कि ये हम कर देंगे तो कि कोई अलग सी चीज जाएगी और इसलिए हमें controversy. No, not at all. We just want to be as close to reality. They didn't even want to play the teaser for you guys. Yeah. I thought I was like, you don't understand. Adnan, no, you don't understand. I was like, and once again, I'm just like, I should. Holy God. No, कोई backfire now. Actually, now you have a line of like suitors. I know, you suitors. Very quickly, 5th March, 7 episodes will go on. No. So 5th March, Tap Mad. Please subscribe. This is कितने की subscription है? 199. 200 रुपए की. पर महीने की है? ठीक है. एक महीने की है, 200 रुपए की है. 5th of March we drop. How many episodes are we dropping? 2, Saturday and Sunday, 5th and 6th. So every week we're going to have 2 episodes. ठीक है. Loudly. Every week we will have 2 episodes. Saturday, Sunday, 5th and 6th March. It's less than the price of a plate of fries. It's less than the price. Yeah, okay. 5th March, and please subscribe ASAP. And we might iPhones, also Android, Smart TV available everywhere. Also, we might actually, and I don't know, ये आप काट दीजिएगा अगर नहीं हुआ, but I think it's no, because I want this to at least the first 15-20 minutes of the first episode we want to put up on YouTube for free. Right. So we actually want to show you a little bit, ताकि आप देखें और आप क्लिक करें और आप साइन अप करें और आप पैसे दें. नहीं क्या पैसे? I think सिर्फ 200 रुपए, and I think it's I mean inshallah you guys better watch it to review it. I really like what I think Zen said, that the brand is not going to decide what you watch. You will decide what you want to watch. Right. Really Absolutely. Absolutely. What did you think of the stuff that we've released so far? The trailer, the songs, the. No, I love it. I think it's a no-brainer. How do you go wrong with it? I mean, कौम का दिल धड़कता है cricket पे. You've got Myra Khan producing it. You've got this new talent, and there's the pulse to it. You know, that you feel there's a vibe to it. We'll really find out when she reviews it, though. Oh, I hope that vibe is consistent throughout the 7 episodes. And you know, I'll tell you something. It's just different. Yeah. It's something different. It's not run of the mill at all. So anything which is different, it has its own value. Nina, can I just say that you make and you produce such progressive content that this little trio is kind of a flag bearer of good content. So how do you go wrong with it? I mean, look at Adnan's body of work. Look at Myra's body of work. Inshallah. Yeah. So lots of hopes, and I hope that next series also happens with the women cricketers or the women sportsmen. Oh, and if not the women sportsmen, I think, it's, like just having something. You can tell she's got something. She's got something. Yeah, she's got something. No, I just think we need to get into middle age as well. Don't you think? Yes. Like we need to just Struggling middle-aged journalists. But also, I think why not? Why not? We don't talk about women middle-age issues. We don't. I think middle-aged women are having a moment, by the way. They are, by the way. They are. Yeah, totally. Can't you see? Your face. Sorry, We'll move over to sorry. now. Okay. we are aiming at some subjects which are taboo, of course, but we're definitely interested in them. But they're also taboo that also brings a lot of awareness. It's not just like a taboo है तो कर दो, वो ले लो, adverse नहीं. वो awareness भी अपने साथ लेकर आएंगे. So we're definitely looking at something like that after this, inshallah. Super. And we'll keep pestering these people for more. Inshallah. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you. We have 2 sensations with us right now. 2, like, I won't say teenage sensations, but young sensations. I'm talking to you now. Oh, मैं वही आपने sensation कहा, मैंने कहा शायद मेरी बात and की हो. Shahveer, absolutely. Yes. We have very little time, but guys, congratulations. Thank you. Great screen presence. Thank you. And we've seen you on television. And we've seen you, of course, online and on YouTube, like you. Yes. Massive following both of you have. Thank you. How does it feel to step into like professional acting now? Amazing. I mean, like I've been saying this all day now, that we feel very lucky to be part of this project because of the team that this project has surrounded itself with.
inclusive of Mahira Khan, obviously, Daniyal, who's an incredible actor. I cannot stop अच्छा talking ठहर जाओ about ना, him. ये तो कह चुके हो ना, ये तो बोल ये दिया, बात ये अभी तो तक press मैंने नहीं conference में की, कह ये दिया नहीं कही मैंने, कि ये क्या नहीं की, दानियाल ये की प्लीज तारीफ रखें, नहीं की। ये प्लीज रखें, मैं आपको थैंक यू। बताना चाह रहा हूँ कि जी। दानियाल की तारीफ मैंने नहीं की, और फिर एक सीन है जो मैंने किंजा का पहली बार देखा, मैं उनकी भी तारीफ करना चाहता हूँ कि ठीक है। दैट सीन एक्चुअली मूव मी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा या ठीक है, आपने तो टीवी पे काम किया है, कोई फर्क लगा? ये ज्यादा मजे का था, क्या फर्क था? मैंने पहले यहाँ पे काम किया था, उसके बाद मैंने टीवी पे काम किया था। फर्क करेक्शन बहुत ज़्यादा था, और जी। और मतलब फर्क इन द सेंस कि यहाँ पे आपने एक बहुत कामयाब एक रमजान सीरियल किया था। नो, आई एम 100% ग्रेटफुल, लेकिन एक होती है चीज़ कि हाँ, एक एज एन आर्टिस्ट आपको कितनी कंटेंटमेंट मिली है आपने जो काम किया उससे। सो आई फील बारहवां खिलाड़ी के अंदर उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि Right. कैरेक्टर डेप्थ थी, Right. और वो मैं बिल्कुल, वो मेरी पर्सनालिटी के बहुत, पर्सनालिटी क्या, वो इंसान ही कोई और था। ताना बाना में स्टिल दानियाल के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स थे, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही कोई और कैरेक्टर था, तो वो एक और वेसल में लेके जाना अपने आप को, इट्स वेरी चैलेंजिंग, एंड हेंस मोर। आप क्या एक दूसरे को जानते थे पहले से? हम एक्चुअली एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। Really? ये मेरे से कौन सा स्कूल है वो? बीकन हाउस डिफेंस Oh, कैंपस, मैं भी बीकन हाउस में रही हूँ वैसे। बीडीसी बॉयज। हाँ, boys. इसको मैं इसको तब से जानता हूँ जब इसको बच्चे पकड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं, बिल्कुल गोल मोटोल सा छोटा सा होता था। क्या मैं भी एक उस वक्त क्लास छोटा में ही नहीं होता थे था। आप दोनों? नहीं, क्लास में नहीं था, मैं इससे सीनियर था 2 साल। अच्छा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नोन हिम अ लॉन्ग टाइम। Right. अ लॉन्ग टाइम। Right. Why did you agree to do this serial? Why बारहवां खिलाड़ी? Because I'm sure offers तो बहुत आई होंगी आपको पहले भी। Yes, I've been offered TV a lot, but I was waiting for something, and this doesn't come from any egotistical approach. I'm humbled by all of the offers that I've gotten from all of the amazing people in the TV industry, but I wanted to do something that I truly felt that was inspiring or moving at least. So I accepted Baarwan Khiladi. For one, obviously, because the team that it surrounded itself with. Secondly, it's something different. Right. It's not your usual run of the mill TV show. It's something that has an element to it, that has a kick to it when You it feel it comes has to a soul as well? Oh, absolutely, Right. Oh, you can 110%. I mean, like ये expression दानियाल का notice reaction ही देख लें. I mean, he's a good Yeah, actor, isn't he? Yeah. मेरा ख्याल था दानियाल ने OST गाया होगा, ये क्या हुआ? नहीं, आई बेसिकली मैं बहुत एक कॉन्शियस एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिंगिंग जो है, मी एज एन आर्टिस्ट एंड मी एज एन एक्टर, देर टू वेरी सेपरेट एंटिटीज एंड देर नॉट कन्फ्यूज, विच इज़ वाई मैंने ताना बाना का भी सीरियल नहीं गाया था, और विच इज़ वाई इवन फॉर बारवा खिलाड़ी आई वॉज ऑन द बैक एंड फॉर म्यूजिक, बिकॉज वो एंटिटी और वो जोन ही कुछ और है। सो वो दोनों जब मिक्स मैच होती हैं, असल में पाकिस्तान में बहुत देर से क्योंकि ऐसा होता आ रहा है, सो आई फील एनी वन इन देयर proper depths of both respective fields have not really gone in all the way. So, ठीक है. let's keep Guys, them we should separate. talk about this in depth later, but मुझे constantly Nina time out का इशारा कर रही है, but there's so much to discuss, obviously. But good luck to you guys. You look Thank great you. on Thank screen you. as well, and I hope this does well, and I hope it opens doors to many more things. Yeah. Absolutely. And this guy also, by the way, has done a tremendous job. PS, yeah. ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था. ठीक है. Kinza, Hashmi, Mir, 2 other stars of Baarwan Khiladi. एक बड़ा interesting teaser हमने देखा about locker room conversations, about harassment on women, and Kinza, रूपोश की तरफ तो बाद में जाएंगे. अभी Kinza has been trending, of course, in the last 1 month, and now Alhamdulillah. और back to back आ रही है ना चीजें, बारवां खिलाड़ी, कश्मीर Absolutely. and रूपोश. आप दोनों बहन भाई का रोल कर रहे हैं जी. और आप obviously बारहवां खिलाड़ी तो नहीं, मगर कई बार खिलाड़ियों में से एक हैं. Right, and this is your first? Yeah, this is my first web series. And so what was the aim? Why web series? कुछ अलग था, कुछ मजे का था. स्क्रिप्ट आप देखेंगी ना तो वो टिपिकल ड्रामा टाइप एक वो नहीं है. इसमें ये कि जो बॉयज हमारी जो लाइफ है ना असल में, हम उसमें वही प्ले कर रहे हैं. Right. तो कैरेक्टर को उठाने में भी इतना टाइम लगा नहीं था हमें. इट्स लाइक यही तो हम हैं. मीरा, आप अदरवाइज क्या करते हैं? मैं एक्टिंग करता हूँ टीवीसी वगैरह, XYZ. इसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट, मतलब मेरी पहली यहाँ पे डेब्यू है. या डेब्यू है. कैसा लग रहा है फिर मायरा खान की प्रोडक्शन में डेब्यू? सब देख लें. बड़ा फिट सीन. तो आपको भाई बना दिया किंजा का, तो ये कैसा? ड्रामे तक सिर्फ. Kinza, how important was that locker room scene? वो मेरा पहला सीन था. और मतलब मेरा इंट्रैक्शन जो अदनान भाई हैं उनसे सिर्फ उस पर वीडियो कॉल पे हुआ था. माहिरा से भी वीडियो कॉल पे हुआ था, बात हुई थी. सेट पे पहुंची और सीन जो है वो
एक पूरे पेज का। आई वाज लाइक यार ये क्या है, और मुश्किल सीन है। हाँ मुश्किल सीन था, और वो एक ही सीन था जो पूरी वेब सीरीज में लाइक बहुत इंपॉर्टेंट था, और मुझे माहिरा ने बोला था कि ये एक इम्पॉर्टेंट सीन है, इसको आपने बहुत ज़्यादा लाइक पूरी जान लगा देनी है। एंड आई वाज लाइक यार ये कैसे होगा। खैर मतलब किंजा सेट पे आई है, मतलब आधे घंटे पहले आई है, सीन शुरू हुआ है, मेरा और किंजा का सीन था, और हमारा पहला उदयनी थी मुलाकात की। सीन स्टार्ट हुआ है, किंजा गई है फील्ड में, करते करते सीन चल रहा है, किंजा की आंख से आंसू 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 आंसू, मेरे आंखें मेरी गीली हो गई। मैंने कहा ब्रो ये कर क्या रही है, मतलब कि वाह यार। And there was one take scene, like no cuts. इतना लंबा पैराग्राफ था वो, और वो without any cut, one take था। And मुझे like उसी वक्त जैसे ही मैंने वो सीन किया है, नॉर्मली नहीं होता कि हम काफ़ी पूरे दिन में, जब हम ड्रामे में काम करते हैं, एक दिन में 12-15 सीन्स हो रहे होते हैं, और आप अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं ना, तो आपको वो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप रोजाना ही देख रहे होते हैं कि यार अच्छा किया, अच्छा ठीक है। लेकिन वो पहला सीन था, पहला दिन था, और जैसे ही मैंने सीन किया तो एक क्लैप की आवाज आई बहुत तेज। लाइक शुक्र है, मतलब कि मैंने कुछ किया है, सही है, वसूल हो गया। कुछ फर्क लगा द वे यू डायरेक्टेड ऑन टेलीविजन और जिस तरीके से यहाँ पे अदनान ने किया? बहुत बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस है, क्योंकि जो नॉर्मली हम काम कर रहे होते हैं वो टीवी के लिए है, और वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इस वाले में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। आप अपने कैरेक्टर के लाइक अगर लड़की भी है तो वो भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉर्मली हम बोलते हैं, तो उस पर भी कोई वो नहीं है कि हाँ कैरेक्टर है, लड़की है। जिस जगह से हम सबको दिखाया गया, और मज़े की बात ये कि सब लाहौर से हैं, मैं भी लाहौर से हूँ, मेरा बैकग्राउंड लाइक आई एम फ्रॉम लाहौर। ही इज द ओनली वन जो Did you have problem with an accent? नहीं इतना नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा वो पंजाबी वाला कर लिया था अपना के भाई चलो कर लेंगे, हल्का सा फील डाल दिया। फील डाल दी थी। फील डाल दी। लेकिन इसमें ज्यादा वो नहीं किया गया था कि हमें पंजाबी एक्सेंट रखना है, लाइक मेरा भी नॉर्मल ही था। लेकिन वो ये कि जब लाहौरी होते हैं ना, तो वो अपने, अगर मैं लाहौर से हूँ तो मैं उसको अच्छे से कैरेक्टर को बना सकती हूँ। अगर ये मतलब कराची से है तो ये कराची का कोई काम होगा, या उर्दू साफ बोलनी होगी तो ये अच्छे से बोल पाएगा। Guys, good luck. पीछे से constantly Yeah, I know, I know. like आपके लिए बहुत you're in demand right now, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, और मैंने मुझे गालियाँ पढ़नी शुरू हो जाएंगी। But good luck. और मैं ख्याल है एक दफा एयर हो जाए, जैसे नीना ने कहा 2 episodes a week, तो फिर we should get together again. Inshallah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It's lovely talking to you. Same here. Thank you. सिलसिला जारी है इंटरव्यूज का। I've got with me now खाकान and Zahar. रियल लाइफ बडीज भी हैं कि नहीं हैं? हैं, और बारवां खिलाड़ी में भी इनका रोल कुछ ऐसा ही है कि बहुत दोस्ती है आपस में। बिल्कुल तो अभी हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग एनर्जी देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि थोड़ी सी लेग पुलिंग भी हो रही है, थोड़ी सी वो राइवलरी भी चल रही थी सबकी आपस में। हाँ नहीं राइवलरी नहीं, बट लेग पुलिंग तो क्योंकि हम सारे थ्रू आउट द शूट हम सबकी दोस्ती इतनी फिट हो गई थी कि हम सारे एक्चुअल फ्रेंड्स बॉयज बन गए थे। तो अब हम कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर लेग पुलिंग, थोड़ा बहुत एक दूसरे का मजाक उड़ाना वो होता है। हाँ या हम लोग ऑन एंड ऑफ कैमरा बस हम लेग पुलिंग तो बस एक चीज है जो कि हम वी जस्ट यूज इट लाइक हैव फन, लाइक दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस गोइंग थ्रू द एंटायर डे, you can't do it without pulling your friends' legs, right? Of course. It makes it fun. So मजा आता है। So just briefly, because this is introductory, what are you guys doing before बारवां खिलाड़ी? आपको तो हम Instagram पे देखते रहते हैं। So what were you doing before? I was modeling, and I did one small role before this. That project has also still not been released. अच्छा ही हो गया। Yeah. ये पहले काफी fit scene हुआ। So I was modeling and I was creating content online on Instagram, fashion content, fitness content. That was my thing, which I still do now. Right. So yeah, that's been my journey. I studied law and he studied marketing. Yeah, I studied law and practiced in a law firm for a bit, hated it, and then I went to a TV channel and tried to learn the art of hosting stuff. So but then I was like मुझे खुद videos बनानी चाहिए, मैं इस channel को क्यों views ला के दूँ? I'm good at it. I should make videos for myself. So I started making videos on Instagram, and one thing led to another. Videos थोड़ा hit shit होना शुरू हो गई, and one day I got a call from Tap and they're like कि हम चाहते हैं आप audition करें। I was like sure. फिर उसके बाद मैंने ये acting की और ये acting की, और ये तो प्रोजेक्ट हमने खत्म कर लिया था पिछले साल फरवरी में। तो आई थिंक अप्रैल या मई के अंदर
came to Karachi, met with a director, Fahim Barni, and both of us actually, and we are now doing a drama for him. अच्छा तो रुक जाओ ना जरा बोला मैं कंटेंट बनाऊंगा अपने व्यूज लेके आऊंगा खुद क्यों ना करूं but is that a means to get to television and to cinema then always wanted to be an right actor. because do you agree that जो internet sensation जो होती है उसकी लाइफ कितनी है शेल्फ लाइफ कितनी है उसकी लाइफ है हमेशा if done properly. Come definitely on. तो वो चल सकती है. Look at Like a movie star? A film star's life is actually also infinite. So is a TV star's if they do it properly. Okay. If somebody does great acting throughout his career, chooses great roles throughout his career, अच्छा वो बंदा कामयाब रहेगा. So you think कि आज से 50 साल बाद हम आज के टिकटॉकर को याद रखेंगे? आज का टिकटॉकर अगर आज से 50 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बताना शुरू हो गया कि भाई टिकटॉक बनाते कैसे हैं, बदलते ट्रेंड्स के साथ किस तरह चलते हैं, टीचर बन गया और वो सिखा रहा है तो उसको लोग देख रहे हैं, तो हाँ वो अभी भी सक्सेसफुल टिकटॉकर है. अगर एक यूट्यूबर एक इंस्टाग्रामर पॉडकास्ट करना शुरू हो जाए इन देयर मिड 30s mid 40s, they are now a podcast person because this is the future, right? This is where people are going to seek content. और like adapt करना भी बहुत जरूरी होता है. Even actors and musicians, producers, everyone adapts to how their industry is evolving. So for content creators, अगर हम भी adapt करते रहें तो हम आज से 30 साल बाद भी relevant रहेंगे. How do your parents react to this career? उनको समझ आता है? शुरू में काफी अजीब था because I started out मैंने marketing पढ़ी, फिर मैंने marketing की job की और ये हमारी थोड़ी जर्नी सेम है कि मैंने रियलाइज किया कि मैं किसी और को क्यों पैसे बना के दे रहा हूँ जब मैं एक चीज़ में अच्छा हूँ, मैं अपने आप को क्यों ना मार्केट करूँ. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट फॉर माई सेल्फ. और ऑब्वियसली शुरू में अम्मी अब्बू थोड़े ऑब्वियसली वो एक और जनरेशन से घबराए, उनके लिए इंटरनेट और इंस्टाग्राम जिस पे वो हैं भी नहीं, तो उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट सपोर्टिव थे. And I just told them that I won't do anything that will either make you ashamed or not be proud of me. You will probably be more proud of me for doing these things. So end goal क्या है? Long term goal क्या है? How long term do you think both of you? अच्छा पहले तो मैं पिछले सवाल का भी मैं भी जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. They were? एंड बट दे वर लाइक कि पहले आप डिग्री करो बेटा, आप पहले वकील बन जाओ. अच्छा वकील बाय द वे बहुत लोगों ने करके छोड़ी है वकालत. हाँ, तो मैं वकील बन गया. फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चलो प्रैक्टिस करके देख लो. किया, मैंने कहा नहीं अच्छा. उन्होंने कहा अच्छा सही है, अब तुम जो मर्जी करो. मैंने कहा अच्छा ठीक है. उन्होंने कहा ये एक टीवी चैनल है, आई नो समबडी देयर, यू गो and you do this. Then I did that and then I was like मैं ये करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा सही है कर लो. So very supportive. और फिर आहिस्ता आहिस्ता there now I hope and I think that they're proud of me. अब लास्ट एंड गोल आपने पूछा था. नहीं वो छोड़ दो. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है. वो ये है कि किंजा की जो कैरेक्टर है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉकर रूम स्पीच देता है कि लड़कियों को जिस तरह ट्रीट किया जाता है. The way men are projected on television is now established as really toxic and problematic. Generally जो लड़के नजर आते हैं उनके कोई ना कोई स्क्रू ऐसे ढीले होते हैं कि समझ नहीं आती कि what kind of heroes are we showing. So as young boys, do you feel that needs to be changed? Is that a true reflection of how men are at your age in these days, or are you happy to be portraying something completely different in बारवां खिलाड़ी? अच्छा मैं बताता हूँ. इसका ना एक सिंपल एक चीज़ होती है जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए. वो ये है कि ऐसी चीज आप दिखा सकते हो, उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जांपल मूवीज लाइक कबीर सिंह, दे शो ऑल ऑफ द टॉक्सिक ट्रेट्स एंड देन दे शो हिम एज अ हीरो. When Kinza gives her talk about like a lecture to her brother about कि ये गलत बात है, she is talking about evil characters. Because तब हम evil characters होते हैं और हम गलत कर रहे होते हैं और बाद में फिर हम realize भी करते हैं कि यार हम गंदे लोग हैं. So वो चीज ठीक है, आप दिखाओ जो रियलिटी है सोसाइटी की, जहाँ लॉकर रूम टॉक हो रही है, लड़के गलत हरकतें कर रहे हैं जिस वजह से आप कहते हो कि यार ये लड़के क्या सोच है, बट फिर आप दिखाओ कि ये गलत है. अगर आप उसे हीरो बनाओगे ना वो गलत, वो तो नहीं करना चाहिए. क्योंकि दुनिया में कॉज एंड इफेक्ट बहुत चलता है. अगर आप उसको हीरो दिखाओगे तो वो ग्लोरीफाई हो जाएगा एंड देन the message that you're trying to portray कि ये चीज़ गलत है वो कभी सामने नहीं आएगी. because if a child watches that वो देख रहा है कि ये बहुत टॉक्सिक कैरेक्टर है लेकिन ये उतना ही सक्सेसफुल है और उतना ही इस ड्रामे में लोगों को पसंद है, so he might take up those traits. So that's the influence it is a fact of society and a fact of people and men, but उसको tackle करना थोड़ा systematic तरीके से जरूरी है. Right.
Thank you, guys. There's a lot of people who are outside waiting for you. And good luck with Baarwan Khiladi. I hope it does open more doors for you. And I hope you continue making really good content. Yeah, and I hope that you make great content because you are making great content. I've been watching your show. हम सिर्फ बैठ के बोल रहे होते हैं. नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा. Who wears what इनका show है, and trust me guys, it is the place to be. बहुत मजा आता है. सारी इंडस्ट्री के लोगों को जो है क्या कहते हैं ये लोग. मेरे कपड़ों का आप करिएगा. मैं आप नोट कर लिए मैंने. अगले जो हमारा एपिसोड है ना उसमें हम आप सबकी जैकेट पिक्चर लीजिएगा, मुझसे मैसेज कीजिएगा. आप बताइएगा ये स्लैशेस आपने खुद डालने अपनी जैकेट में. ब्रांड की जैकेट है, बड़ी महंगी जैकेट है, बट आपने मुझे करना है. मैं चाहता हूँ ताबिश मुझे रोस्ट करे, या ताबिश को अगर अच्छा लगे तो तारीफ करे. दानियाल को तो रोस्ट कर लिया अगले एपिसोड में. अच्छा, किस में जो शलवार कमीज पहन के मॉर्निंग शो गया, जो शलवार कमीज नीचे उन्होंने जूते पहने थे ना, उस पे उन्होंने रोस्ट कर दिया. अच्छा. मैंने भी दिमाग में रोस्ट किया. हां मैंने भी देखा चुके हैं. बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. ताबिश और किंजा ने जो यिन यांग किया था ना अपने आउटफिट्स का, उस पे हम रोस्ट कर चुके हैं दोनों का. बस बेस्ट. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम.